जय हिंद दोस्तों। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, राइट। एनी रियल नंबर के, कोई भी एक नंबर है के, उसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब कहेंगे? व्हेन उस के को अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो। ठीक है, दिस मीन्स द पॉलिनोमियल इज px, हमने x के प्लेस पर क्या पुट कर दिया? वैल्यू k, राइट। इफ यू वांट यू कैन आल्सो राइट दिस p एट x इक्वल्स टू k। जब पॉलिनोमियल में आपने x के प्लेस पर k रखा और आंसर आ गया जीरो, देन दैट नंबर k इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। ओके, नाउ so for example, if any polynomial is given to us and there is any number and we have to check that whether that number is zero of polynomial or not, तो हम क्या करेंगे? जस्ट x के प्लेस पर उस नंबर को पुट कर देंगे और ठीक है कैलकुलेट करेंगे। इफ द आंसर इज जीरो, दैट मीन्स वो नंबर उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा, राइट। चलो, दिस इज हाउ टू चेक। लेकिन अगर हमें फाइंड करना होगी पॉलिनोमियल, कैसे फाइंड करना है? सो टू फाइंड जीरो ऑफ px, राइट। तो अगर हमारा पॉलिनोमियल क्या हुआ? लीनियर, इन लीनियर पॉलिनोमियल, राइट, वी पुट, अगर हमें जीरो फाइंड करना है एंड इन लीनियर पॉलिनोमियल, देन व्हाट वी डू? वी सिंपली पुट px इक्वल्स टू जीरो एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x, राइट। याद रखिएगा, ठीक है, ये k नंबर जीरो है, दैट मीन्स व्हाट? एक x की वैल्यू है जो आंसर जीरो देती है, राइट। सो दैट मीन्स अगर हम जीरो फाइंड कर रहे हैं तो व्हाट वी आर फाइंडिंग एक्चुअली? वैल्यू ऑफ x, जिस पर पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? जीरो। सेकंड, इफ द पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल we find zero by a method, ठीक है, which we will be studying in, ठीक है, upcoming exercise, ठीक है। what is the name of that method? Splitting middle term. The method name is splitting middle term, right? Okay, now so this is the topic of our, ठीक है, next exercise 2.2, right? Before that, just write down some note in the. Now we can see what the first point of note is: non-zero constant polynomial has no zero, right? For example, what are constant polynomial? Px equals to 5, let's say, right? सो दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आप सोचिए कि हम x की वैल्यू ऐसी क्या रखें, ठीक है, कि आंसर जीरो आ जाए, राइट। इन दिस केस आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, ठीक है, आंसर हमेशा क्या आएगा? 5, बिकॉज यहां x पुट करने के लिए कोई, ठीक है, वैल्यू ही नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन सी लाइक दिस। अगर एक पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू x माइनस 2, राइट। अगर आप इसमें x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 2, राइट। सो दिस, इफ वी हैव पुट x इक्वल्स टू 2 हियर, तो आपको यहां भी पुट करना पड़ेगा 2 माइनस 2, द आंसर विल कम आउट टू बी 0, राइट। सो आप क्या बोलेंगे? x इक्वल्स टू 2, राइट। x इक्वल्स टू 2 क्या है? इस पॉलिनोमियल का 0। सिमिलरली, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 5, आप इसमें x के कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 0, 1, 2, राइट, आंसर विल ऑलवेज कम आउट टू बी 5 ओनली। आप 1 पुट कर लीजिए, राइट। अब यहां x है नहीं तो यू कैन नॉट पुट एनीथिंग, आंसर विल कम 5 ओनली। यू पुट 2, ठीक है, ये हम अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं, 1, 2 एंड सो ऑन, राइट। इसमें भी आंसर 5 आएगा। सो देयरफॉर वी कैन से कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, राइट। ओके, please note it down and now come to the exercise 2.2. The very first question is the first question is about to find the value of polynomial this at x equals to the following points, right?
exercise 2.2 question number first. What we are supposed to find, we are being given a polynomial. जब भी polynomial का नाम नहीं given होगा px, तो we will always let it px. तो सबसे पहला स्टार्टिंग हमारी कैसी रहेगी, let px equals to, ठीक है, the given polynomial. What is the given polynomial? 5x minus 4x square plus 3, right? Now, ठीक है, do remember whenever you write the polynomial, it should be in descending order, right? तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, पावर 2, x की पावर 1 and without x, right? So this is our polynomial and we have to find the value of this polynomial. First of all, at x equals to, first of all, in place of x we will put the value 0, right? In second we will put the value of x as -1, and in third case we have to put the value of x equals to 2, right? So this is the question about. So what we will do, polynomial में at place of x what you will put 0. तो इस polynomial में आप x के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 0. तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए -4 into 0 का स्क्वायर प्लस 5 into 0 plus 3, right? This whole will come 0, this whole will come 0 and plus 3. So ultimate answer will be 3, right? So polynomial में जब आपने 0 डाला तो आंसर क्या आया, 3, right? Similarly, you have to find the value of the polynomial at x equals to -1 and the value of the polynomial at x equals to 2. ठीक है, चलिए ये वाला देख लेते हैं. This you will do yourself. Polynomial, ठीक है, in place of x you will put -1. तो जब आपने यहाँ -1 पुट किया तो यहाँ सारे में -1 पुट कर दीजिए. So this will be -4 into -1 का स्क्वायर प्लस 5 into -1 plus 3, right? Now this will be -1 का स्क्वायर will be +1 and -4 into 1 will give you -4. Now plus minus minus and 5 bन जा 5 plus 3, right? So this will be -4 and -5 will give you -9 plus 3. The answer come out to be -6. Similarly you will do the third part, ठीक है, of this question. Now come to the second question, ठीक है. Pause the video and write down this. Come to the second question. Now, in second question, what is being said? Find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials. ठीक है. The second question is same as question number first, but there are, ठीक है, different polynomials. ठीक है. For example, in second question we are discussing second case, right? वहां polynomial में variable is t. So pt is given to us as 2 plus t plus 2t square and minus t cube, right? Now this is the polynomial. As I told you, you need to write in the descending order, right? So highest power will be first minus t cube, then 2t square, then plus t, then plus 2, right? Now first of all you have to find p of 0. That means at x equals to 0, the value of x we should put 0 in this case, right? Second, what we have to find at x equals to 1, and lastly we have to find third case at x equals to 2, right? So this is the second part. Similarly in first part also there is the polynomial. You have to write the polynomial, then you have to find the value at x equals to 0,
at x equals to 1 and then x equals to 2, and the same goes for third part and fourth part. So let's solve this part. So this will be in place of, sorry, this is t, at t equals to 0, at t equals to 1 and at t equals to 2. So in place of t we will put 0 everywhere. So this will be p0 equals to minus 0 cube plus 2 into 0 square plus 0 plus 2, right? So this will be 0, 2 into 0 will come 0, plus 0 plus 2. Final answer will be 2, right? Now at t equals to 1, at t equals to 1, right? In place of t you will put 1, so in place of t you will put 1, just put 1 everywhere. So this will be minus 1 ka cube plus 2 into 1 ka square plus 1 plus 2. So this will be 1 का क्यूब will come 1 only, ठीक है? This is t equals to 1. So 1 का क्यूब is 1 and this minus sign will remain, plus 2 plus this will be 1 and plus 2, right? Minus 1 and plus 1 gets cancelled and 2 plus 2 will come 4, right? Similarly, come to case 3. We will put t equals to 2 in the whole polynomial. Just put here t equals to 2 minus 2 का cube plus 2 into 2 का square plus 2 plus 2, right? Now 2 का cube is 8 plus 2 का square is 4 and 4 into 2 will give you 8, 2 plus 2. When you will, now this is minus 8 and this is plus 8, gets cancelled, 2 plus 2 comes out to be 4. So this is the solution for second question, and the same you have to do for each and every part. Now come to question number 3rd. Now in question number 3rd, we have to check whether the given number are zeros of the given polynomial or not, right? Let's say we are solving any two parts in this. Let's say we are solving question number we are solving fourth part. Yeah, let's say fourth part. First of all, we are solving first part, right? What is the polynomial? P x equals to x plus 1 and x minus 2, and the points which are given that are minus 1 and 2. Minus 1 and 2. What we are supposed to do, ठीक है, हमें चेक करना है कि minus 1 और 2 इसके zeros हैं कि नहीं. Do remember in the starting what we have studied. अगर कोई नंबर के 0 होगा only when जब उसको हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और आंसर कितना आ जाए पॉलिनोमियल का 0, then that particular number is called 0 of the polynomial. So let's put this and check. So first of all, add x equals to, we will put the value of x is minus 1, right? Polynomial in place of x, write minus 1 everywhere. So this will be minus 1 plus 1, right? And this will be minus 1 minus 2. So minus 1 plus 1, 0 into minus 1 minus 2 will give you minus 3. 0 multiplied by any number gives you 0, right? Now since you will put this sign which is called since polynomial में x के place पर minus 1 put करने पे value आ गई 0, so therefore you will say x equals to minus 1 is 0 of px, is 0 of px, right?
Similarly, when you will put at x equals to 2, right? So just put here x equals to 2 everywhere. So this will be 2 plus 1 and this will be 2 minus 2, right? 2 plus 1 is 3, multiply 2 minus 2 0 and 3 multiply 0 will give you 0. Again you will write since पॉलिनोमियल में जब हमने x के प्लेस पर 2 पुट किया उसकी वैल्यू आ गई 0. सो देयरफॉर दिस साइन इज कॉल्ड देयरफॉर जो x इक्वल्स टू 2 है इज 0 ऑफ px, is 0 of px, right? So this is the complete solution for third part. Fourth part, let's solve another part. Let's say we are solving sixth part, right? Let's come to sixth part. So the polynomial is Lx plus m, Lx plus m, and we have to check whether minus m by L is 0 of polynomial or not, right? So simply what we will do, at place of x we will put minus m by L, right? So just put the value this minus m by n in the whole polynomial, right? So this will be L. So in place of x what value you will put? Minus m by L, and the rest will remain same. So this is in multiplication, right? So L into minus m by L, L से L get cancelled, plus m. Now what is left? Minus m plus m. Minus m plus m gets cancelled and the answer is 0, right? Since we will put the sign of since जब हमने पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर माइनस m by L पुट किया आंसर आ गया 0. So therefore we can say x equals to minus m by L is 0 of polynomial, right? So with this this exercise gets completed, right? Pause the video and note this down. Okay. So ठीक है, we will meet in the next video with next exercise. ठीक है, जय हिंद जय भारत.